In an unprecedented move by the Modi government, the Union Cabinet has approved a 10% reservation for economically backward upper caste sections. The 10% reservation will be applicable in government jobs and will be given to those with an income less than 8 lakh rupees or with land of less than 5 acres. The Modi government will move the constitutional amendment in Parliament tomorrow. The decision has come just months ahead of the 2019 general election and which could be seen as a master stroke from the centre. बीजेपी के एजेंडे में भी ये बहुत पहले से रहा है और आज सरकार ने बीजेपी के उस एजेंडे को भी लागू किया है। सामान्य वर्ग के लोगों को इसकी आवश्यकता थी जो पिछड़े हुए हैं, तो उन पिछड़े वर्ग के लोगों को जो प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं सबका साथ सबका विकास, केवल कहते नहीं है, करके आज उन्होंने दिखा दिया है। सामान्य वर्ग के लोग आज प्रसन्न हैं। हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी की भूरी प्रशंसा करते हैं। निर्णय जो है, निर्णय बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक है, ऐतिहासिक निर्णय है, हिस्टोरिकल निर्णय है, क्योंकि बहुत सालों से सवर्ण समाज में से मांग हो रही थी। महाराष्ट्र में मराठा हो, गुजरात में पटेल पाटीदार हो, हरियाणा में जाट हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सभी जातियां ये बोल रही थी कि भाई एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलता है, लेकिन हमारे समाज में भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की संख्या है, तो ऐसे गरीब लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। यदि ऐसा फैसला कैबिनेट ने किया है, जिसको मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, यदि ऐसा निर्णय कहीं हुआ है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य होगा और समाज के सवर्ण वर्ग के ऐसे लोग जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत और सुकून साबित हो। मैं ये सोचता हूँ कि हर एक फैसले को, हर एक निर्णय को चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया या चुनाव के रिजल्ट से जोड़ करके देखना कि ये रीति है, इससे ऊपर उठ करके हमको देश के हित में। This is a historic decision where the upper caste will get 10% reservation. We hail the decision of the Union Cabinet. We hail the decision of the Prime Minister. It's going to be a game changer for all those who really deserved support from the general category people who will be given 10% reservation. The government will bring this constitutional amendment. It's a great day in Indian democracy and Indian history. एक लंबे समय से हम लोग ये मांग करते रहे हैं, एक लंबे समय से हम लोग चाहते हैं कि जो स्वर्ण जाति के जो गरीब लोग हैं उनको ये आरक्षण का भी उनको लाभ मिले। मुझे खुशी है कि हमारी आज की सरकार ने कम से कम ये फैसला लिया। अब मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई राजनीति होनी चाहिए, कम से कम इस फैसले की इसकी शुरुआत हुई है और जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जो भले स्वर्ण जाति से आते हों, अग्रणी जाति से आते हों, उस वर्ग से आते हों, कम से कम उनको भी उनका हक आज मिला है। We'll go across to India Today's National Affairs editor Rahul Srivastav. Rahul, elections around the corner, big quota move by the Modi government. Nobody is going to see the two things apart. But how do you see this actually playing out? There is a sense that it will be challenged in court, but by that time, by the time anything actually happens, the elections will be over. So the political value will be expended. Shiv, this is a absolutely dipped in political syrup move by the government. There is no doubt that the timing does raise a clear fact that the government is eyeing a certain vote banks which had parted away from the government. Also, remember, economically weaker section is a very interesting criteria because it cuts across caste lines. It cuts across work spheres. Say, for example, if there were farmers who were unhappy with the government and their sons and daughters wanted jobs or education reservation, because the government is now planning to amend Article 15, add a clause 6, amend Article 16, which pertains to employment, 15 pertains to education. There will be quotas in aided, unaided government schools, barring minority institutions. So it does cut across the class lines also. And that is why what one can say is that it is a terribly bold move. Now remember, historically, those who have opposed opposition for any section of the society has taken a political hit. Remember in 1990 when VP Singh came out with a Mandal agitation report, implemented it, the political parties which opposed it fell by the wayside, and that led to the rise of the Mandalites like Mulayam Singh Yadav and Lalu Prasad Yadav, and very strong vote banks like the Yadavs and others in the country.
And that is why implementation is an issue, yes. Yes. Because, of course, in the Lok Sabha, the government has the numbers, but in the Rajya Sabha, there will be a problem. But the fact is that will people stall it or will people oppose it? Because I think opposing it as a matter of a political ideology will be very difficult. The BJP, the political parties have seen what happened to the BJP Yes. in Bihar when Mohan Bhagwat's statement on Dalit reservation created tremendous backlash against the BJP. Absolutely. And the BJP lost Dalit votes. And that is why I'll say it's a cat among the political pigeons. The BJP has said it. If the BJP tries to bring it tomorrow, the opposition will say it's too hasty. They want to study the bill. What are the provisions? The government has even set an economic criteria, which is already being talked about, 8 lakh rupees annual income, Yes. 1,000 square feet flat in a flat owned by somebody, 100 square yard plot in municipality area, non-municipality 200 yards. So there is a meaty resolution that the government has presented today. If the government comes up with a bill tomorrow, maybe the fault lines will also emerge in terms of what happens to minorities. Will they benefit from it? All these elements will create a political churn. Yes. And that's what the government really wants. The message about a quota 10% above the 50% for SC, ST, OBCs to reach the Absolutely. common man. Very, very interesting. Dipped in political syrup, as you so evocatively put it, Rahul. Thank you very much for putting that in the picture for us. Meanwhile, the centre's decision to give 10% quota to the economically backward classes has also expectedly received criticism from the opposition. Here go some reactions. Constitution clearly says that you can't have more than 50% reservation. So where are they going to accommodate this? In principle, we are not against. But practically, they have brought something not to implement and only to make it as an election stunt. क्या ये पुराने जुमलों की तरह एक और तो जुमला नहीं है? पिछले 10-12 दिन से संसद चल रही है। तत्कालीन फैसला तो पहले भी लिया जा सकता था। अब 2 दिन का बचा है संसद का काम, तो 2 दिन में कैसे इम्प्लीमेंट इसका कर पाएंगे? और दूसरी बात कि संविधान में भी कास्ट आधार पर और सोशली बैकवर्ड के आधार पर संविधान ने पैरवी रखी है कि आरक्षण दिया जा सकता है। ये 10% आरक्षण का जो मामला है, कहीं एक लॉलीपॉप साबित हो सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी है कि संविधान में इसकी ना कोई पैरवी रखी गई है, फिर ये लागू कैसे करेंगे लोगों के लिए? उन्होंने ये भी कहा है कि हम उनका संविधानिक संशोधन करेंगे, वो हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अगड़े और पिछड़ों की राजनीति करने की फिर से शुरुआत हो चुकी है, लोकसभा चुनाव से पहले सवर्णों वोट बैंक जो नाराज थी, खासतौर पर मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव में, उनको अपनी तरफ खींचने का यह प्रयास है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सवर्णों के मतलब योगी आदित्यनाथ की जो ठाकुर वाली जो पूरी राजनीति वहाँ चल रही है, उसके खिलाफ जो जिस तरह से ब्राह्मण हो, बनिया हो, वो लोग नाराज थे, तो उनको भी खींचने का यह प्रयास है। तो इसी प्रयास है, इसको इम्प्लीमेंट तो होना ही नहीं है, क्योंकि 2 दिन का सत्र बचा है। 2 दिन में कैसे वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इसका? तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक नया नाटक शुरू हुआ है। आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं है। आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब ने इसलिए किया था कि जो सदियों से जो वर्ण व्यवस्था जो कायम थी और जिस प्रकार से जो भेदभाव छुआछूत जो हुआ करता था, जन भागीदारी की जहाँ तक बात थी, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ऐसे समाज में बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटीज की, जहाँ एक बराबर के नजरिए से लोगों को एक अधिकार मिले। इसके वजह से ये आरक्षण प्रावधान किया था। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण नहीं है। जो फैसला लिया गया है चुनाव को देखते हुए, अभी देखिए ना, अभी क्या है नहीं है, देखा जाएगा ना भाई किस हिसाब से। Union government has approved 10% reservation for economically, upper caste section people. You see, this is a joke with the people. They know that there can be no reservation in excess of 50%. They are only trying to befool the people by saying that we have done it, but the court didn't allow. And in any case, they can't even get this passed through the legislature. The ordinary bills can't be passed. How are they going to bring constitutional amendment? Well, they are saying that they want to bring in a constitutional amendment bill. How? From where are they going to get it passed? This is only to start the blame game. But the question is, either you have economic criteria for reservations or you have the caste basis. You can't have a caste reservation and again, without removing the creamy layer, you say that now the upper also will be given reservation on economic criteria. The criteria has to be simple and uniform.
इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन मिलता ही नहीं है। रिजर्वेशन मिलता है डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड पर, अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पर, और उसका एम्पिरिकल एविडेंस होना चाहिए। एम्पिरिकल एविडेंस कहाँ है बताइए आपके पास? तो ये सब जुमलेबाजी है। लोकसभा चुनाव से पहले ये एक जिसको हम उर्दू में कहते हैं शोबेदेबाजी कर रहे हैं, ये कानूनी नहीं टिक पाएगा। ये ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शंस इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, they were accused, even there are reports from BJP that upper castes have moved away from BJP, so they want to please upper castes when they go to the general elections to the parliament. So it's all election motivated, political motivated moves. अगर आपको किसी प्रकार का अमेंडमेंट लाना है, उसके लिए आपको संविधान सभा की तरह की बहस का आहूत करनी होगी। आप वो कर नहीं रहे हैं। आपके लिए महज जुमलेबाजी है। आपको रेटरिक क्रिएट करना है ताकि 4 दिन ये चले, क्योंकि अगर आपकी प्रतिबद्धता होती तो तरीके और होते। आप तो जातिगत जनगणना के आंकड़े बाहर नहीं कर पा रहे हो साहब। उसी से तो पता चलेगा कि कौन सी जाति कहाँ पे है। कई सारी जातियां जिसका आप लिस्ट में नाम नहीं जोड़ पाएंगे। अगर वो जनगणना के आंकड़े बाहर होते तो वो भी होता, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता खबर बनाने में है, आपकी प्रतिबद्धता समाज बदलने में नहीं।